Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good सो अभी morning, sir. 2 मिनट वेट कर लेते मॉर्निंग। सो अभी 2-3 मिनट वेट करते हैं जिससे कि सर बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप पे सर उसके आपको बाद क्यूरी सेंड की हुई सर, एक बार प्लीज कुछ पूछ रहे हैं। हेलो यस, टेल मी। आपको व्हाट्सएप पे इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम एक टाइम दी है तो मेरे इंस्टॉल हो रहा है। आनंद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, आनंद, आपकी आवाज नहीं आ रही। देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर माइक्रोफोन। हेलो हेलो यस आनंद, टेल मी। तो मेरे इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम हो रही थी और मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था उसका आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? वॉइस ओवर कर सकते हैं? ये वॉइस ओवर हुआ पड़ा है आपकी वॉइस में। नॉर्मल वॉइस यूज करिए। हेलो हाँ आनंद, टेल मी। सर इंस्टॉलेशन सर प्रॉब्लम आ रही थी ओरेकल डेटाबेस का सर मैंने आपको सर उसका स्क्रीनशॉट भेजा है सर व्हाट्सएप पे सर, प्लीज एक बार उसका सॉल्यूशन शेयर बता करो, दो स्क्रीन शेयर करो प्लीज। सर। वो मेरी दूसरी लैपटॉप में सही, मैं मैक से ज्वाइन किया हूँ, मैक से। ओके, एक्चुअली देख के ही पता लग पाएगा ना कि वो सेटअप वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके सर, मैं उस लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ। Just give me a हम्म, second, sir. हम्म। सर हेलो यस अंबुज, टेल मी। सर, कल आपने बोला था एक वीडियो देखने के लिए री मॉड्यूल के ऊपर। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, हाँ 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 हाँ, ठीक है। आज अभी जब हमारा ये थ्योरेटिकल सेशन खत्म हो जाए ना, तो एक बार फिर से रिमाइंड करा देना, तो देन आई विल अपलोड। ठीक है, एक बार मैं सर्च करके होगा मेरे पास तो आई विल अपलोड दैट। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन को, उसका भी एक आइडिया होना चाहिए। उस वीडियो लेक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर। और सर हमको आज मेल आया एक, मतलब कि मंडे से क्या स्टैटिस्टिक्स और आर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे उसके ऊपर। हाँ, जो बिग डेटा स्टूडेंट्स हैं, बिग डेटा का मंडे से आर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा आई थिंक। एंड जो एआई स्टूडेंट्स हैं उनका फंडामेंटल ऑफ एआई स्टार्ट हो जाएगा। एंड देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू। You will be having module and examination lab assessment on this Saturday, so prepare well accordingly. उसके मार्क्स भी आपके कंसिडर होंगे एंड एट दिस टाइम यू नीड टू कीप योर कैमरा ऑन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सैटरडे को ही रखेंगे और सेकेंड हाफ में ही रखेंगे एग्जाम को। एग्जाम ये आपका एमसीक्यू प्लस लैब असेसमेंट होगा। और इसमें जितना आज हम कवर कर लेंगे ना, उतना ही उस एग्जाम में हम कंसिडर करेंगे, जितना आज कवर कर लेंगे। हेलो सर। यस, टेल मी आनंद। So it is shared. हाँ, स्क्रीन शेयर है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। Sir, this is the problem. It's showing in the process. Oracle database configuration in the process, and Oracle database configuration assistant in the process. अभी मेरे को जो विंडो दिख रही है ना उसमें बस 100% हो गया है, और नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ हाँ, इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करो तो क्या दिखाया है? और एक इंस्टॉल सक्सेसफुल वर्ड सम कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट फील्ड दिस। अच्छा, क्लोज कर दो इसको। ये कुछ एरर आया था बीच में और आपने कंटिन्यू कर दिया, वैसा तो नहीं हुआ? Sir, one error is showing. Let me do it this again. चलो चेक करते हैं, पहले तो देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कुछ कंपोनेंट मिसिंग हो गए इसमें। क्लोज कर दो इसको। क्लोज करके ओपन करो एसक्यूएल प्लस को।
हाँ आनंद, लगता है नेटवर्क डिले है, लगता है कुछ। आपने स्क्रीन क्लोज कर दी है ये जो इंस्टॉलेशन वाली थी? Yes, sir. अच्छा, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क डिले, क्योंकि मेरे को स्टिल अभी वही विंडो ही दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन अनशेयर हो गई है आनंद। So now it is shared. हाँ, नाउ इट इज शेयर्ड। तो यहाँ पे हाँ, यूजर नेम में नहीं, यूजर नेम में टाइप करो सिस्टम, पासवर्ड जो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपने यूज किया है। मैंने रिकमेंड किया था सीडक 1234, अगर आपने भी वही यूज किया, जो भी पासवर्ड यूज किया उसको टाइप करिए, टाइप करके एंटर कर दो। ठीक है, काम कर रहा है, सही है, इट इज Okay, वर्किंग। Okay. Thank you, sir. हेलो सर, एक डाउट था हाँ मयूर, टेल मी। सर। अभी अपना सैटरडे को जो टेस्ट होने वाला है ना, उसमें सब मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, फाइल, हाँ डेट एंड टाइम, हाँ सब उसका बिल्कुल, मतलब क्वेश्चंस रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ एरर, डेटाबेस बिल्कुल। का भी रहेगा? हाँ, जितना हम आज कवर कर लेंगे ना, आज डेटाबेस का भी हो जाएगा, तो इतना रखते हैं, या डेटाबेस का ना रखे? बताइए, इंटरनल है मतलब हमारे हाथ में, रखे या नहीं? डाटाबेस अभी नहीं रखें तो सही रहेगा। चलो ठीक है, डेटाबेस वाला पार्ट नहीं रखते हैं, तो डेटाबेस से पहले जितना भी हमने कवर किया हुआ है, राइट, हम्म, तो वो सारा पार्ट इसमें रहेगा। ठीक तो है, सर थियरी कितनी रहेगी? मतलब थियरी और जो रहते हैं ना कोडिंग के क्वेश्चंस, एग्जाम तो ऐसे ही वो कितने रहेगा, रहेंगे सर? एमसीक्यू बेस्ड उसी तरीके से रहेगा जैसा मैंने क्विज लिया था, ठीक है ना? हाँ, पर उसमें उसमें को जैसे भी क्वेश्चन देने कि और अगर ये रन किया तो क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, या वैसे रहेंगे, या बस हाँ, बेसिक मतलब थियरी? कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होंगे। अगर कोड भी दिखाए तो उसमें कुछ एरर वगैरह पूछ लूंगा, या कुछ है अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन उसी तरह का ही मैं बनाऊंगा, ठीक है ना? और सेम 40 क्वेश्चंस के? कॉन्सेप्चुअल ही ज्यादा रहेगा। हाँ, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, क्योंकि ओके। जो आपका इवोल्यूशन होगा ना, एमसीक्यू का आपका 20% वेटेज रहेगा, जो लैब असेसमेंट है उसका 40% हाँ वेटेज रहेगा। उस 40% में भी जो 10% है वो आपके असाइनमेंट का है, तो 30% वेटेज होगा आपके लैब असेसमेंट का। तो उसमें 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और कुछ मैं आपको लैब असेसमेंट की लैब एक्सरसाइज दूंगा वहीं पे, जो आपको करनी है, और फिर उसका कोड वहीं पे शेयर करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, ठीक है? और इस बार ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपका कैमरा भी ऑन रहेगा। सर बट पाइथन में अभी वो वेब डेवलपमेंट वाला सब पार्ट बाकी है अभी। ये एआई के लिए है, केवल डीबीडी के लिए नहीं है, और वो भी एक इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना, वैसे तो अपने आप में बहुत वास्ट है, तो एक ओवरव्यू है आपका, तो जेंगो का एक ओवरव्यू हम आपको देंगे, एंड दिस इज ओनली फॉर एआई, नॉट फॉर डीबीडी। सर मंडे से फिर आप नहीं रहेंगे, दूसरे सर रहेंगे? नहीं, मंडे से कुछ और हो जाएगा। बाकी जो हमारे कुछ ये मशीन लर्निंग पैकेज बसते हैं ना, पांडा, numpy, मैटप्लॉटलिब, तो ये जो आपका मशीन लर्निंग सेशन होगा उससे पहले एक बार मैथ्स वगैरह भी आप कर लेंगे, दोनों सेशन, दोनों जो बैचेज है जब कर लेंगे, तो आपके मशीन लर्निंग सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं 2-3 दिन का वो सेशन लूंगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो बस एक सर वही, इस सैटरडे को से एग्जाम है ना सर? हाँ इस सैटरडे एग्जाम होगा, क्योंकि जो मंडे होगा, मंडे से आपके न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। एंड सर ये लास्ट सैटरडे लास्ट एग्जाम का सर अभी तक रिजल्ट नहीं पता चला सर ना, सॉल्यूशन सर। शेयर कर दिया है मैंने, ठीक मेल है आईडी सर। चेक करो, ओके सर, ओके। उस पर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना? आपको स्कोर भी पता लग जाएगा, जो स्कोर दिख रहा होगा ना आपका उसमें, वो आउट ऑफ 40 एमसीक्यू बेस्ड से है, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव है उसका वेटेज नहीं है, ठीक है ना? जो रिजल्ट आपको गया होगा। सर और इस वाले एग्जाम में से डिस्क्रिप्टिव रहेगा सर? इसमें हाँ,
एक तरह से वाइवा की तरह रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वो, तो कुछ डिस्क्रिप्टिव भी मैं दूंगा आपको। जो लैब असेसमेंट है ना, लैब असेसमेंट में कुछ डिस्क्रिप्टिव का सेशन रहेगा, एक्चुअली वो वाइवा की जगह मैं उनको यूज करूंगा वहां पे। शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, बाकी तो लैब के कुछ क्वेश्चंस तो मैं दूंगा। ठीक है, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। So now you are familiar what is database, right? What is the role of SQL? So we use SQL to write different types of query. As I have mentioned, we can divide these SQL queries, SQL statement in various categories like DDL. DDL are those statements which are used to define and modify table structure only, and we have DML statements which are used to manipulate your records, right? जिसमें हमने कुछ DDL पे काम भी की है, create, alter, rename, truncate, drop, ये सब एग्जाम्पल है हमारे DDL के। DML में we have insert, update, delete, ये हमारे DML ऑपरेशंस है। बाकी सेलेक्ट भी है, कुछ डेटाबेस एक्सपर्ट सेलेक्ट को डीएमएल कैटेगरी में ही रखते हैं, कुछ उसके लिए अलग से कैटेगरी बना देते हैं जिसको बोलते हैं डीक्यूएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, तो कुछ सेलेक्ट को इसमें कंसीडर कर लेते हैं, राइट? सो हियर वी हैव दिस। इसी तरह से डीसीएल भी होता है, डाटा दिस डीटीएल, डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज भी है, ग्रांट रिवोक है डीसीएल में। डीटीएल है डेटाबेस ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, तो ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अभी मैं एक ओवरव्यू ले लूंगा आज। डेटाबेस ट्रांजैक्शन, राइट? तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन की बात करके चलते हैं, चलो आज इसी से स्टार्ट करेंगे। एंड ऑलरेडी यू नो दैट you have familiar with data constraints. So as you know, data constraints are used to enforce some business rules on your data when it is being stored in your database table, right? And we have various data constraints like a primary key, which is used to uniquely identify a record. We have foreign key, which is used to establish relation between the table. We have unique key. It is similar to your primary key, only with one difference. It allows multiple entries of null values, and it can also be the basis of a relationship, like primary key. We have not null, and now we have check constraint. If you want to define your condition and you want to impose that while data entry is taking place, you can use check constraint for that. So we have these different types of constraints. We have already discussed about that. After that, you have seen the cases of various operators, and you have seen the case of various functions, where we have worked with single row functions. इसमें आपने single row functions में we have taken इसमें आपके string function है जिसको character function भी कहते हैं. You have worked with some string function, some number function, some date function, and conversion function. So we have taken the case of this. And we have worked with multiple row function also, जिनको हम group function या aggregate functions भी बोलते हैं. We can use these terms also. And you have seen the use of group by having also. How can you group your record and get the result per group? And if you want to impose
some condition on group by records, on grouping records, you are using having for that. So it's like it is working as a filter with group by as you use where with your normal individual rows, right? So we have taken these part. Now we have taken these part. Now today we will be starting with join, but before join I would like to discuss about this database transaction statement, right? So first of all I am going to take the case of this. So basically in database transaction we have this commit, rollback and rollback to save point. We use these. Now what happened? See, when you are writing various DDL and DML queries, so here these DDL statements are auto committed. We use one statement with DDL that DDL statements are DDL statement, DDL queries are auto committed. So auto commit, but DML statements are not auto committed. What is the meaning of it? What is the meaning of commit? Commit means whatever you have done before commit, that will save permanently in database side. It will be reflected permanently at database server side. See what happened basically. Whenever you are using detail statement and I have mentioned these are auto committed, automatically commit हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि moment you are creating your table, create is also one example DL. So moment you are creating a table, it will be reflected permanently on the database server side. Suppose you are working as a client and you are connected with some database server, right? तो जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं वो परमानेंटली आपके डेटाबेस सर्वर पे स्टोर हो जाता है at the same time. But these DML statements are not auto committed. If you are working as a client and you are performing various insert, update or delete operations, these will not be stored permanently at database server side unless you do commit. Means it may be the case you are working in one session and in current session you are performing some insert, you are performing some updation, some deletion. So and when you are checking, you are getting that information, okay, this operation has been completed. But it may be the case if you are working as a client, it is not reflected in database server permanently. तो हो सकता है जैसे आप सेशन क्लोज करें और दोबारा वर्क करें ओपन करके, यू सी दैट कुछ नहीं हुआ, इंसर्ट अपडेट डिलीट तो हुआ ही नहीं जो कि हम आपने किया था. इट विल हैपन बिकॉज डीएमएल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑटो कमिटेड. तो उनको परमानेंटली सर्वर पे स्टोर करने के लिए आपको कमिट यूज करना पड़ेगा. और कमिट को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लेते हैं तो सिंपल कमिट सेमीकोलन करके एग्जीक्यूट कर देना है, राइट. सो उससे पहले कमिट से पहले लास्ट कमिट जो होगा से पहले जो भी किया वो परमानेंटली आपके सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, राइट. सो दैट तो इसलिए इट इज रिकमेंडेड जब भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं तो जब इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं तो आप कमिट करते रहें उसको, तो वो परमानेंटली आपके सर्वर पे स्टोर हो जाता है. फिर आप सेशन क्लोज करके कभी भी उसको ओपन करेंगे तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड देयर आल्सो. सो दैट इज कमिट. अब आते हैं रोल बैक. Rollback are used to undo a part or entire transaction. अब ये ट्रांजेक्शन क्या होता है? What is database transaction? What is database transaction? What do you think? What is database transaction? Transaction क्या है? ट्रांजेक्शन वर्ड की बात करें, what is that? Yes, tell me if you have some idea. What is transaction? It's an exchange between any two parties. Like you give me something, I'll give you something, maybe with some set of rules or something. And when we can say that a transaction is successful or a transaction is failed, होता है ना, आप नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी करते हैं, राइट. तो अगर आपने डेबिट किया दूसरी साइड पे वो क्रेडिट हो, राइट, या सो that only then we can say it one banking transaction is successful. Changes reflect होना चाहिए दोनों साइड पे. सर फीडबैक आता है. हाँ,
So basically database transaction क्या है? Database transaction, it is a series of operations. Database transaction used to refer series of operation performed to complete a particular task. That is your database transaction. तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा हूं तो इट मे बी द केस कि वन रिक्वायरमेंट आई हैव परफॉर्म सम इंसर्ट. सपोज मैंने 3 इंसर्ट परफॉर्म किए, 3 बार मैंने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया एज पर माय रिक्वायरमेंट, एंड आफ्टर दैट आई हैव परफॉर्म सम अपडेट. मैंने कुछ 2 अपडेट चलाए किसी तरह के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और कुछ रिमूवल भी करना था तो मैंने कोई डिलीट चलाया, राइट. आई हैव परफॉर्म सम डिलीट ऑपरेशन. तो ये जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी है ना एक सेशन में, सो इट इज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. ये एक ट्रांजेक्शन हुआ आपका, राइट, कि कंप्लीट होगी टास्क आपकी. तो ये तो हुआ ट्रांजेक्शन की बात, सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क. अब आते हैं रोल बैक पे. रोल बैक इज यूज्ड टू अंडू अ पार्ट और एंटायर ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे जो अगर मैं इसको इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज वन डेटाबेस ट्रांजेक्शन, इसमें किसी भी पार्ट को या पूरे ट्रांजेक्शन को ही अंडू कर देना, उसके लिए हम रोल बैक यूज करते हैं. तो इसमें अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, सी मैंने ये परफॉर्म किया इंसर्ट, ये सब किया, इससे पहले मैंने कमिट कर रखा है, सपोज इससे पहले हमने यूज किया, मैंने कुछ यहाँ पे कमिट कर दिया. कमिट का मतलब है इससे पहले जो भी आपने किया होगा ऑपरेशन वो परमानेंटली आपके डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट हो गया. उसके बाद मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट चलाए, डीएमएल ऑपरेशन ऑटो कमिटेड नहीं होते, तो अब मैंने कुछ ऑपरेशन चलाए. आफ्टर दैट इफ यू हैव रिटर्न रोल बैक, अगर मैं रोल बैक लिख दूं तो क्या करेगा, इट विल रिमूव ऑल दिस ट्रांजेक्शन अप टू लास्ट कमिट. कमिट से पहले जो गया वो तो परमानेंटली चला गया, उसको नहीं कर सकते. तो अप टू लास्ट कमिट जो किया हुआ है सब फिर से आपके इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएगा डेटाबेस की, सब रोल बैक हो जाएंगे. मींस ये आपके इनका जो इफेक्ट है वो सब रिमूव हो जाएगा, राइट. इट विल अंडू दैट पार्ट. तो रोल बैक किया तो पूरा कर देगा. लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर पार्ट को या आपको अंडू करना है, इफ यू फील दैट कि ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे आई डोंट रिक्वायर, मेरे को अंडू करना है, तो पहले तो मार्कर सेट करने पड़ेंगे इन पे. तो मार्कर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेव पॉइंट, उसको हम बोलते हैं सेव पॉइंट. तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्कर सेट कर दिया सेव पॉइंट, उसके लिए हम सेव पॉइंट कीवर्ड यूज कर लेते हैं, सेव पॉइंट, और कुछ भी नेम दे दो मार्कर को, सेव पॉइंट ए. यहाँ पे एक मार्कर बनाया, और सपोज मैंने यहाँ पे एक मार्कर बनाया, इसको मैंने कुछ और नेम दे दिया, पॉइंट बी. तो अब अगर मैं लिखूं रोल बैक टू सेव पॉइंट बी, तो व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल अंडू द पोर्शन अप टू दिस मार्कर. सेव पॉइंट बी लिखा है हमने, तो अप टू दिस, तो इसको अंडू कर देगा. तो अगर हम अब चेक करेंगे ये ऑपरेशन नहीं दिखेगा, बाकी ये सारे ऑपरेशन बने रहेंगे. लेकिन अगर मैंने लिख दिया रोल बैक टू सेव पॉइंट ए, तो सेव पॉइंट ए के बाद जो भी किया गया वो सारा अंडू हो जाएगा, ये सारा रिमूव हो जाएगा. तो आपको जब आप चेक करेंगे तो केवल ये इफेक्ट दिखेगा, और खाली अगर रोल बैक कर दिया तो सारा ये रिमूव हो जाएगा. सो दैट इज रोल बैक, राइट. यू आर रोलिंग बैक टू सम मार्कर और टू द इनिशियल स्टेज अप टू लास्ट कमिट. अगर कमिट किया, कमिट से पहले जो गया वो परमानेंटली सेव हो जाएगा. सो दीज आर सम database transaction statement which can use to control your operation, control your transactions basically as per your requirement. So इसलिए जब भी इंसर्ट अपडेट डिलीट हम चलाएं ना, कुछ भी करें, तो उसके बाद कमिट जरूर कर देना चाहिए, और कुछ नहीं करना, आपको कमिट लिख देना, कमिट सेमीकोलन एंटर, दैट्स इट. उससे पहले जो भी होगा वो परमानेंटली डेटाबेस सर्वर पे स्टोर हो जाएगा आपका. सो अब आते हैं हम ज्वाइन पे. सी टिल नाउ we have worked only with single table, and whatever information we have retrieved through select, we have retrieved it from single table only. But in real time it may be the case we want to retrieve the information in multiple tables at the same time. So how can you do that? For that purpose we use the concept of join. उसके लिए join queries हम लिखते हैं. So here suppose for example I am having 2 tables. मेरे पास 2 tables हैं. We have 1 table employees. Suppose I'm having 1 table employees, and in this employees table we have some column. We have some column like we have say employee ID, employee name, and suppose we have salary,
we have suppose DPT ID. यहाँ पे in this is working as a primary की नहीं भी कर रही है तो भी, लेकिन concept actually हम ये यूज करें, अगर आपने अप्लाई भी किया तो भी ठीक है. And this is working suppose as a foreign. नहीं भी अप्लाई किए कंसेप्ट तो भी काम करेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन बैकग्राउंड पे एक्चुअली इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम कर रहे हैं, तो आई एम रेफरिंग दिस आल्सो. एंड अब मैंने इनमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए. अब ये डीपीटी आईडी एफके कर रहा हूँ तो डिपार्टमेंट भी होगी इससे पहले ऑब्वियसली, नहीं तो ये कैसे बनेगी. तो सपोज मेरे पास एक और टेबल है डिपार्टमेंट. वी हैव वन मोर डिपार्टमेंट्स से, एंड इन दिस डिपार्टमेंट्स टेबल आल्सो वी हैव सम कॉलम. We have some column, say DPT ID, and here this DPT ID is working as a primary key, and we have suppose DPT name, department name say, and we have suppose location, and here we are having some record. तो यहाँ पे भी हमारे रिकॉर्ड है. सपोज यहाँ पे हमारे कुछ रिकॉर्ड है, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है, सपोज 10, 20, 30, और इन्हीं के कुछ डिपार्टमेंट नेम के रिकॉर्ड है हमारे पास. सेल्स, मार्केटिंग, HR सपोज, और इनकी डिफरेंट लोकेशन है, कोई भी लोकेशन, तो कोई भी यहाँ पे लोकेशन है. सपोज वी हैव मुंबई, नोएडा, हैदराबाद. सो एंड सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव सम रिकॉर्ड. बहुत सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जिनके लिए एम्प्लॉय नेम, सैलरी, वैल्यूज, और डीपीटी आईडी में मैंने ये 10, 20, 30 ये सब रिपीट हो सकती है. सपोज वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट टेबल. नाउ आई वांट टू गेट वन इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू सी एम्प्लॉय आईडी. I want to retrieve one information where I want to see employee ID, employee name, and his or her department name. Suppose information मेरे को चाहिए, right? अब EMP ID and MP name, this information is available in employees table, but this DPT name information is available in DPT name, this departments table. So basically here we are trying to retrieve the information which is coming, which is available in two different tables. So how can you do that? So for that purpose we can use a join query, right? So we can use join query for that. अब यहाँ पे क्या होगा कि तो join query जो start होती है आपकी, join query को अगर हम समझे, अभी तक जो इस query को हमें from से समझना शुरू करना चाहिए. From के बाद हम लिखते हैं table. But at this time I am trying to retrieve the information from two different table. तो उन tables का name लिख लो. So here दो different tables से हम ले रहे हैं. Employees. तो जितने भी 2 हैं, 3 हैं, जितने भी टेबल से आप कर रहे हैं, तो from के बाद ही हम लिखते हैं ये. So I can refer. तो इसको हम यहीं से understand करना शुरू करना चाहिए. Employees, departments. Now you want to retrieve information. क्या information retrieve करनी है वो हम select से start करते हैं. As per this query select, and we want to get, क्या करना है मेरे को, ये तीनों information चाहिए. इसको ऐसे इस तरह से करके लिख देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा. तो अब यहाँ पे MP ID हमने retrieve किया. Here we have retrieved MP name, comma, and this DPT name. लेकिन होता क्या है इस सिनेरियो में, आप एक हम कन्वेंशन यूज करते हैं स्कीमा की. हियर वी राइट लाइक दिस कि जो एम्प्लॉइज टेबल से रिलेटेड हम ऐसे लिखेंगे, एम्प्लॉइज डॉट EMP ID, ये एम्प्लॉय का पार्ट है, एम्प्लॉइज डॉट EMP नेम, और ये DPT नेम हमारा डिपार्टमेंट्स टेबल से, तो इस टेबल का नेम. तो इस तरीके से हम लिखते हैं और थोड़ा और क्लैरिटी आती है. डिपार्टमेंट्स डॉट वी राइट लाइक दिस. So here we are writing like this. Now
सो हियर अगर मैं क्वेरी को यहीं पे छोड़ दूं, इफ आई एम राइटिंग दिस क्वेरी, तो क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये भी एक जॉइंट टाइप है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कार्टेशियन, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये प्रॉब्लम क्या है? सपोज अगर मैं कंसीडर करूं ये एम्प्लॉय टेबल है मेरी, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर सपोज मेरे 100 रिकॉर्ड है, इसमें 100 रोज है, 100 रिकॉर्ड्स है। डिपार्टमेंट में सपोज मेरे 3 या चलो 3 रिकॉर्ड्स मान लिए हमने, बहुत ही कम रिकॉर्ड है, 3 ही रिकॉर्ड्स है, 3 रोज है, 3 टपल्स है। सो अब होगा क्या, अगर आप क्वेरी को यहीं पे छोड़ देते हैं तो व्हाट हैपन, here every record of one table will be related with each and every record of this, means इसका ये फर्स्ट रिकॉर्ड इसके 100 रिकॉर्ड से रिलेट करेगा, फिर 20 भी इसके 100 रिकॉर्ड से रिलेट करेगा, और ये भी इससे 100 रिकॉर्ड से रिलेट करेगा। इसका मतलब बैकग्राउंड में आपकी 3 into 100, इसका मतलब 300 रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग होगी। सी आपके एक टेबल में केवल 3 ही रिकॉर्ड है, दूसरे में 100 रिकॉर्ड है, बट प्रोसेसिंग हो रही है आपकी 300 रिकॉर्ड की। आर यू गेटिंग? अभी तो बहुत ही कम रिकॉर्ड है, फिर भी इतने सारे रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग हो रही है। दिस थिंग इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जनरली वी अवॉइड इट। अब कैसे अवॉइड करेंगे? टू अवॉइड दिस वी यूज जॉइन कंडीशन। तो टू अवॉइड, तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉब्लम, कि अगर एक डिपार्टमेंट टेबल में हमारे रिकॉर्ड्स हैं और एक एम्प्लॉय में 100 रिकॉर्ड्स हैं, टोटल जो प्रोसेसिंग होगी रिकॉर्ड की वो आपकी इन रिकॉर्ड्स की होगी। सो जनरली वी अवॉइड इट, एंड टू अवॉइड problem to avoid Cartesian product, you can say, to avoid the problem of Cartesian product, we use join condition with join query. Join condition in join query. जो अभी लिखे वो join query है, क्योंकि we are writing it to join 2 tables and trying to access the record from this table. So we use join condition in join query. और join का भी ध्यान रखिए, इसमें भी एक हम यूज करते हैं, to join and tables there should be n-1 join conditions। जिसका मतलब कि अगर मैं 2 टेबल को ज्वाइन कर रहा हूं तो एक ज्वाइन कंडीशन तो होनी ही चाहिए। अगर 3 टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो 2 ज्वाइन कंडीशन तो होनी चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हो सकती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, लेकिन ज्वाइन कंडीशन इतनी तो होनी चाहिए। अब ये ज्वाइन कंडीशन कैसे हम बताएंगे? तो ज्वाइन कंडीशन में बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिलेट टू डिफरेंट टेबल्स। तो अगर यहाँ पे करें तो उसमें जो फॉरेन की होता था ना, प्राइमरी की फॉरेन की, वो आपका ज्वाइन कंडीशन का बेसिस बनेगा। बेसिकली जो कॉमन है, अब 2 चीजें हैं, 2 चीजें कैसे रिलेट होंगी? ठीक है, 2 चीजें कैसे रिलेट होते हैं? कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो होगा, तभी तो ज्वाइनिंग होती है, रिलेशन बनता है, रिलेट होता है चीजें आपस में, राइट? सो हियर आल्सो तो क्या है, व्हाट इज कॉमन? दैट कॉमन थिंग विल बी द ज्वाइन कंडीशन। तो क्या कॉमन है दोनों में? दोनों टेबल में क्या कॉमन है? अगर हम टेबल की स्ट्रक्चर देखें, दिस इज टेबल स्ट्रक्चर, सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ? तो कॉमन को हमें पता ही है, तो डीपीटी आईडी। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वेर की तरह। और क्या स्टाइल है ज्वाइन कंडीशन को लिखने के लिए? मैं उस स्टाइल को ले रहा हूं जो हर डेटाबेस में काम करता है। बाकी इसके और भी स्टाइल है, जिसमें हम कुछ इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट, ये कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी यूज कर लेंगे। ये जो ज्वाइन मैं करने जा रहा हूं, दिस टाइप ऑफ ज्वाइन इज नोन एज इक्वी ज्वाइन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये जो सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, माइस्क्यूएल में भी ऐसे ही काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर में भी करेगा, और हमारा ओरेकल में भी करेगा।
So where, so you will write like this, where employees table name employees dot dptid equals to departments dot dptid। तो यहाँ पे इससे कॉमन हो जाता है, तो जो केवल मैचिंग रिकॉर्ड होंगे उसी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी रिजोल्व हो जाती है। तो इस तरह से जॉइन कंडीशन जो होनी चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई और स्पेसिफिक कंडीशन है तो आपको पता ही है, वो तो आप एंड या और ऑपरेटर यूज करके और भी कंडीशन बता सकते हैं। सो दिस इज योर जॉइन क्वेरी। और कई टाइप के जॉइन होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन। मोस्टली हम इसी को इक्वी जॉइन को यूज करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइन। वी हैव इक्वी जॉइन, इसके लिए भी कई वर्ड यूज कर लेते हैं। इक्वी जॉइन को हम कभी कभी नेचुरल जॉइन भी बोल देते हैं, नेचुरल जॉइन भी टर्म यूज कर लिया जाता है। कहीं कहीं पे इसको हम इनर जॉइन भी बोल देते हैं। कुछ एक और स्टाइल होती है यहाँ पे इसको लिखने की, जिसमें इनर कीवर्ड वगैरह भी यूज करते हैं फॉर द सेम थिंग। बट मैं यहाँ पे सिंटैक्स वो लिख रहा हूँ जो हर एक डाटाबेस में सेम तरीके से काम करते हैं। तो इक्वी जॉइन है, नेचुरल जॉइन है, इनर जॉइन है, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म हम इसके लिए यूज कर लेते हैं। इसी तरह ये इक्वी जॉइन है। इक्वी जॉइन इज दैट टाइप ऑफ जॉइन वेयर यू आर यूजिंग इक्वलिटी टू कंपेयर, इक्वलिटी इन जॉइन कंडीशन यू कैन से, टू कंपेयर टू टेबल्स टुगेदर, टू रिलेट टू टेबल्स टुगेदर। तो इक्वलिटी ऑपरेटर है, इसलिए इसको हमने इक्वी जॉइन बोल दिया। इसी तरह से नॉन इक्वी जॉइन भी होगा, नॉन इक्वी जॉइन भी होता है। नॉन इक्वी जॉइन जहां पे आप कंडीशन, जब जॉइन कंडीशन बता रहे हो, इन जॉइन कंडीशन यू आर यूजिंग अदर ऑपरेटर, दिस इक्वलिटी, इसकी जगह कोई और ऑपरेटर हम यूज करें, तो दैट थिंग विल बी नोन एज नॉन इक्वी जॉइन। इसी तरह से आउटर जॉइन भी है। आउटर जॉइन क्या करेगा, सिंपली इक्वी जॉइन में क्या है कि आउटपुट में वही आएगा जहां पे मैचिंग है रिकॉर्ड्स की दोनों टेबल्स में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैचिंग वाले रिकॉर्ड भी चाहिए और फिर उसके बाद जो अनमैच रिकॉर्ड बचते हैं, राइट, किसी भी टेबल को रेफर करके किसी भी टेबल के कुछ अनमैच रिकॉर्ड को भी आपको आउटपुट का पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आउटर जॉइन। तो इट विल कंटेन कॉमन रिकॉर्ड्स एज वेल एज नॉन कॉमन रिकॉर्ड्स, राइट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट से थोड़ा कम, बट इक्वी जॉइन से ज्यादा। तो कब रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। और एक और जॉइन है यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, दैट इज सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन यूज टू जॉइन टेबल with itself. When you are joining a table with itself, so it is known as self join. तो उसमें हम एक ही टेबल को दो टेबल की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। मोस्टली हम इन्हीं को यूज करते हैं, इक्वी जॉइन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। नॉन इक्वी जॉइन का भी एग्जांपल ले लेंगे, आउटर तो कम ही देखा है मैंने, और सेल्फ जॉइन का भी एक एग्जांपल ले लेंगे। सो कम टू दिस, तो इक्वी जॉइन, सो दिस इज इक्वी जॉइन जो हमने लिया, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। हियर आई हैव रिटन इक्वी जॉइन। अब इसमें क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है, ये जो हमने क्वेरी लिखी है, ये दिस इज इक्वी जॉइन बेसिकली। अब यहाँ पे क्या कि एवरी टाइम वी नीड टू राइट दिस, एवरी टाइम वी नीड टू राइट दिस एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट डॉट, राइट। सो यू कैन राइट इट इन सिंपल मैनर। मैंने आपको बताया था कि यू कैन यूज एलियासेस फॉर कॉलम्स, इवन यू कैन यूज एलियासेस फॉर योर टेबल्स आल्सो, and you can use some short name for your aliases and refer those aliases during this join query. इसी query को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका एक और सिंपल तरीका बताते हैं कि when you are writing this query, you can write this query like use, so जिसमें आप table aliases use कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, जैसे एम्प्लॉइज को मैंने एक एलियास दे दिया ई, कुछ भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट्स स्पेस, इसको मैंने बोल दिया डी। तो एलियासेस मैं यूज करा एम्प्लॉइज के लिए ए, डिपार्टमेंट्स के लिए डी। अब जहां पे आपने आप बार बार एम्प्लॉय लिखा ना, केवल ई लिख दोगे। एम्प्लॉइज को रेफर करने के लिए केवल ई, जो भी आपने यूज किया इट इज यूजर डिफाइंड, और डिपार्टमेंट को रेफर करने के लिए डी। जब आप इस अप्रोच को यूज करें तो हर एक जगह आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कहीं पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऐसे करके लिख दिया और कहीं पे ईडी, तो दैट विल बी रॉन्ग। सो सेम क्वेरी कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिव है इसी का, सो यू कैन राइट जॉइन क्वेरी लाइक दिस आल्सो।
In this way you can extract the record in from different tables. तो अगर हम अपने डेटाबेस पे इसको ट्राई करके देखें, सो हमारे पास टेबल है, पहले तो चेक कर लेते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वी हैव दिस रिकॉर्ड. एम्प्लॉय में हमारे ये रिकॉर्ड है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट बनाया था. डीपी चेक कर लेते हैं, बनाई भी थी हमने, चेक करना पड़ेगा है भी. हाँ है, ठीक है. सो वी हैव दिस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. अब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. आई वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड दिस डी नेम. ये तो दो टेबल में अवेलेबल है, तो वी कैन राइट सेलेक्ट. अब तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं एलियासिस यूज करूंगा, या फिर चलो इस बार पहली बार लिख रहे हैं तो पूरा लिख लेते हैं. एम्प्लॉय डॉट empid comma employee dot ename department dot dname from दो टेबल से लिए तो we can write employee department where कंडीशन वेयर एम्प्लॉय डॉट. अब अगर मैं इसको यहीं पे इसको एग्जीक्यूट कर देता ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देता. इसका हर एक रिकॉर्ड इसके हर एक रिकॉर्ड से रिलेट होता. अगर इफ यू वांट टू सी दैट, चलो पहले इसी को कर लेते हैं. सी, तो यहाँ पे 12 रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग हुई, क्योंकि इसमें 3 रिकॉर्ड है, इसमें 4 रिकॉर्ड है. सो जनरली वी अवॉइड इट, ऐसा हम नहीं करते हैं. तो हियर वी कैन राइट जॉइन क्वेरी वेयर एम्प्लॉय डॉट dptid कॉमन है, आई थिंक कॉलम का नेम dptid, ठीक है. एम्प्लॉय डॉट dptid इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट dptid कॉलन. तो सी, हियर वी आर गेटिंग दिस रिकॉर्ड. तो 4 मैचिंग रिकॉर्ड है, तो चारों की मैचिंग. तो वी हैव empid, e-name एंड डिपार्टमेंट नेम. इवन अगर टेबल एलियासिस भी हम यूज करना चाहें इनके साथ, तो वो भी कर सकते हैं. तो हियर टेबल एलियासिस भी यूज करें तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो फिर इस हर जगह इसको चेंज कर देते हैं. ई डॉट दिस, ई डॉट दिस, डी डॉट दिस, डी डी डॉट. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, we are getting same output, right? Sometimes it may be the case that मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं है, मेरे को कोई और ऑपरेटर चाहिए. तो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट. सपोज यहाँ पे कुछ सैलरीज हैं, और इन सैलरीज को हमने ग्रेड में डिवाइड करते हैं. कुछ ग्रेड में डिवाइड किया गया सैलरीज को. तो सपोज कुछ और मैं सैलरी वैल्यू जिसमें इंसर्ट कर लेता हूँ. Employee values
और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट, हाँ सैलरी में कर लेना 5 और एम्प्लॉई सपोज कोई भी नेम ले लेते, यहाँ पे सैलरी में कर देता हूँ, कर देते हैं 30। So here we have this. So अब इनको है ना मैं कुछ ग्रेड में डिवाइड करता हूँ कि हमने ना सैलरी है कि एक तो उनको हम ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, कुछ सैलरी ग्रेड ए में है, कुछ ग्रेड बी, तो एम्प्लॉइज को हमने ग्रेड में डिफाइन कर दिया। सपोज एक टेबल बनाता हूँ, एक टेबल, उसको मैं नेम दे देता हूँ कुछ, सपोज ग्रेड, सपोज एमपी ग्रेड कर देते हैं, चलो एम्प्लॉय ग्रेड, and here I'm using some column, suppose here I'm specifying grade, so इसको मैं ले रहा हूँ where cat 2, साइज ले लेते हैं कुछ, सपोज साइज मैं ले लेता हूँ इसका 2, और इसको मैं प्राइमरी की भी बना देता हूँ। तो आप चाहे कॉलम लेवल पे कर लो या तो इसको grade cat 2 and here after that I'm writing here I'm writing उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, हम कुछ ग्रेड देते हैं जिसमें रेंज बताते हैं कि कुछ अगर सैलरी रेंज कहाँ पे है, तो रेंज बताने के लिए मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ। सपोज इसको मैंने बोल दिया लोएस्ट अंडरस्कोर सैलरी, लोएस्ट को सैल बोल देते हैं, इसका हम ले लेंगे नंबर टाइप नंबर 14,2 डेसिमल। इसी तरह से कॉलम में ले लेता हूँ यहाँ पे हाईएस्ट अंडरस्कोर सेल, उसको भी क्रिएट करते हैं टेबल को, टेबल क्रिएटेड तो ये हमारी टेबल की है, राइट, and after that I'm inserting record in this, insert into MP grade, और डायरेक्टली हर एक कॉलम में मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो आई एम स्पेस में वैल्यूज, और यहाँ पे ग्रेड में कर रहा हूँ सपोज ए, लोएस्ट सैलरी हमने रख दी, सपोज अगर सैलरी हमारी 1 लाख, लोएस्ट 1 लाख हो और हाईएस्ट 10 लाख, सो ये हाईएस्ट हमने की, तो इसके लिए तो ग्रेड ये हो गया। इसी तरीके से मैं और भी करता हूँ, यहाँ पे बी में हमने रखा अगर सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, तो इसको हमने ग्रेड भी दे दिया। इसी तरीके से अगर सैलरी हमारी 10,000 से 50,000 के बीच में हो, हम बोलते हैं इसको, तो अगर सैलरी इनके बीच में है तो उसके लिए हमने ग्रेड सी कर दिया। सो हियर नाउ
हियर वी हैव दिस। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, दिस आर द रिकॉर्ड, सेलेक्ट EMP grade, so here we have this। तो यहाँ पे हमने कुछ रेंज दी है और उनको ग्रेड दे दिया है। और अगर मैं एम्प्लॉय को देखूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमारी कुछ हर एक एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी है। तो व्हाट आई वांट नाउ, आई वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड ग्रेड, कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से ग्रेड में आ रहा है। तो मेरे को 3 कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी और उसका ग्रेड। तो जो ग्रेड की इंफॉर्मेशन है, इट इज अवेलेबल इन दिस EMP ग्रेड, राइट। तो ऑब्वियसली हर एक रिकॉर्ड को मैच करना है एक रेंज से, और कोई भी अगर किसी रेंज में आ रही है, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड आएगा। तो यहाँ पे इक्वलिटी का तो केस नहीं है, यहाँ तो रेंज के बेसिस पे हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो ज्वाइन कंडीशन होगी ना, ज्वाइन कंडीशन में इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं होगा, कोई और ऑपरेटर चाहिए। कौन सा ऑपरेटर? रेंज के साथ डील कर रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? विच ऑपरेटर विल बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू डील विद सम रेंज, व्हेन वी वांट टू गेट सम बिटवीन एंड, between हाँ, तो बिटवीन एंड है, so we can make use of this for join condition। तो query will be like this, see we can write query like this। तो अगर इस query की हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि स्टार्ट आपको फ्रॉम से ही करना चाहिए। तो हमारी क्वेरी कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इन दोनों टेबल को कंसिडर करता हूँ, फ्रॉम, कौन कौन सी टेबल इन्वॉल्व है यहाँ पे, एम्प्लॉय, EMP ग्रेड। और मेरे को अब इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, सेलेक्ट, फॉर सपोज इनके लिए ना मैं वो ले लेता हूँ, इस बार एलियास यूज कर लेता हूँ EMP ग्रेड, और इसके लिए इसको मैं बोल देता हूँ सपोज G। EMP ग्रेड के लिए G यूज कर लिया, एम्प्लॉय के लिए E यूज कर लिया, राइट। सो हियर वी कैन राइट, वी वांट E डॉट E नेम, एम्प्लॉय का नेम चाहिए जो कि एम्प्लॉय टेबल में है, और इनकी सैलरी चाहिए E डॉट सैलरी, एंड मेरे को चाहिए ग्रेड जो कि इस EMP ग्रेड टेबल में, तो G डॉट ग्रेड, कॉलम का नेम, हाँ ग्रेड, ठीक है। सो ग्रेड फ्रॉम दिस, और अब ज्वाइन जो कंडीशन है, वेयर, ज्वाइन कंडीशन होगी वेयर E डॉट सैलरी बिटवीन G डॉट लोएस्ट सेल, ये कॉलम लिखा हमने, लोएस्ट सेल, लोएस्ट अंडरस्कोर सेल, एंड G डॉट हाईएस्ट सेल। ये इसका, तो ये इसको हम बोलते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन, क्योंकि इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं है। तो अब चेक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सी हियर वी हैव एम्प्लॉय नेम, सैलरी, और कौन से एम्प्लॉय का कौन से ग्रेड में पढ़ रहा है, वी आर गेटिंग दिस बेस्ड ऑन द रेंज वी आर गेटिंग। सो नाउ, सो दिस इज नॉन इक्वी ज्वाइन। आउटर जॉइन का ज़्यादा यूज हमने नहीं देखा। आउटर जॉइन को यूज करना है तो ओरेकल में तो इट इज़ वेरी इजी, सिंपल। आपको करना क्या है, आउटर जॉइन है कि मैचिंग वाले रिकॉर्ड है, उसके अलावा किसी भी टेबल का आपको कौन सी टेबल से, फर्स्ट वाली टेबल से, यहाँ पे हम जो मल्टीपल टेबल लिख रहे हैं, फर्स्ट टेबल से या सेकेंड टेबल से कौन सा लेना है, तो उस बेसिस पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको 3 टेबल से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको ज्वाइन कंडीशन 2 चाहिए। उसका भी एक एग्जांपल मैं पीपीटी से आपको बताता हूं। तो कोई भी कितनी भी टेबल हो सकती है, जैसे मैं बताया ना, टू ज्वाइन एन टेबल यू नीड टू स्पेसिफाई n-1 ज्वाइन कंडीशन। अगर 3 टेबल से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो 2 ज्वाइन कंडीशन होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी कंडीशन आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है, वो एंड या और ऑपरेटर के थ्रू हम कंबाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट तरह के हैं, ये जो क्रॉस ज्वाइन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ही चाहिए आउटपुट में, तो दैट टाइप ऑफ ज्वाइन इज नोन एज क्रॉस ज्वाइन। तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, इसको हम क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं। अगर आपको करना ही है, यही रिक्वायरमेंट ही है,
तो दिस टाइप ऑफ जॉइन इज नोन एज क्रॉस जॉइन। नेचुरल जॉइन आपको बताया, आउटर जॉइन के भी वेरिएशन है। तो ये तो हमारी होगी जिसमें दिस इज द क्वेरी वेयर वी आर गेटिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल्स। तो एक जॉइन कंडीशन चाहिए, राइट, आई हैव मेंशन दैट। बट इफ एलियासिस का भी यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू रिट्रीव द रिकॉर्ड इन फ्रॉम 3 टेबल्स तो रिलेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आई वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 3 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय जिसमें कुछ कॉलम है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की। यहाँ पे डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट आईडी आपकी प्राइमरी की है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी यहाँ पे फॉरेन की है तो कहीं ना कहीं प्राइमरी की होगी, तो लोकेशन करके एक टेबल बनाएगी अलग से जहाँ पे लोकेशन आईडी प्राइमरी की है, बाकी और इन्फॉर्मेशन और कॉलम है, सिटी नेम, लोकेशन नेम, व्हाटएवर you are specifying. Now suppose I want to get one information, I want to get a last name, department name and city. तो जो last name information है वो employees table में है, department name information जो है हमारी here it is in department table, city जो information, city की information location table में है। तो अब आप इनको join कर, 2 join condition होगी, क्योंकि if you are trying to join 3 tables you need to specify 3-1, that is 2 join condition। और जॉइन कंडीशन कैसे होगा, एक तरह से जो प्राइमरी की फॉरेन की जैसे हम कुछ यूज करते थे ना, बेसिक आपने अप्लाई भी नहीं की हो, बस जो फुलफिल होनी चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट मैचिंग वगैरह की, तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो उसी कैसे किया हमने, सेलेक्ट ई, पहले तो हमने इनका एलियासिस ले लिया एम्प्लॉइज, तो फ्रॉम के बाद टेबल नेम दे दिया, एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट, लोकेशन, इनका एलियासिस यूज कर लिया, ई फॉर एम्प्लॉय यूज कर लिया, डी फॉर डिपार्टमेंट यूज किया, एल फॉर लोकेशन यूज कर लिया। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो रिट्रीव करना है वो बता दिया हमने, और फिर आए जॉइन कंडीशन पे। तो वेयर, तो सी पहले डिपार्टमेंट को, हियर वी आर स्पेसिफाइंग एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को रिलेट किया डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, उसके बाद एंड लगा दिया हमने, उसके बाद जो डिपार्टमेंट और लोकेशन को रिलेट किया लोकेशन आईडी के बेसिस पे। तो हम जब अपना डेटाबेस डिजाइन करते हैं ना, वी आर डिजाइनिंग लाइक दिस कि फ्लो मेंटेन हो। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट लिया, डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की बन गई, डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन यहाँ पे लोकेशन आईडी प्राइमरी के यहाँ पे फॉरेन की बन गई, जिससे कि कभी भी मेरे को इन तीनों से इंफॉर्मेशन निकालना हो तो कोई ना कोई बेसिस चाहिए, कॉमन चाहिए कुछ, तो इसलिए हमने इस प्राइमरी की फॉरेन की जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको मैनेज किया। इन दिस वे यू कैन गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो एक फ्लो मेंटेन किया, इसीलिए तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अगर नहीं होता, कोरिलेट ही नहीं कर पाते, तो जॉइन कंडीशन यूज नहीं हो पाती। तो इन दिस वे यू कैन गेट द रिकॉर्ड फॉर मल्टीपल टेबल्स। ये आप मैंने नॉन इक्वी जॉइन का केस दिया है। आउटर जॉइन में सिंपली मैचिंग रिकॉर्ड प्लस अनमैच रिकॉर्ड किसी भी एक टेबल के। तो कैसे करेंगे, जिस टेबल के चाहिए उससे अपोजिट में प्लस यूज कर दो। ओरेकल में सिंपल ये करते हैं, जो जॉइन क्वेरी लिख रहे थे ना, बस इस तरह से ये पेरेंथेसिस में प्लस लिख देते हैं। ये कहलाता है इसको अगर मैं दूसरे और भी टर्म यूज कर लेते हैं, दिस इज नॉन एज राइट जॉइन, राइट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, एंड दिस इज नॉन एज लेफ्ट आउटर जॉइन। राइट साइड में है तो लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो राइट आउटर जॉइन भी बोल देते हैं कुछ दूसरे प्लेसेस पे। तो ये एक तरीका है, लेकिन आउटर जॉइन का कम यूज देखा है मैंने। तो इट इज फॉर मैच एंड मैच रिकॉर्ड, ये तो बड़ी स्पेसिफिक सी रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन में हम क्या करते हैं, सेल्फ जॉइन मींस वी आर जॉइनिंग ए टेबल विद इटसेल्फ। व्हेन यू आर जॉइनिंग ए टेबल टू इटसेल्फ, इट इज नॉन एज सेल्फ जॉइन। अब इसका क्या पर्पज है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एमपी मास्टर हमने टेबल बनाई थी, आई थिंक, चेक कर लेते हैं। register from emp_mstr, हाँ ठीक है। तो सी हियर वी हैव क्रिएटेड वन टेबल। अगर हम इस टेबल को देखें, मैं थोड़ा अगर फॉन्ट थोड़ा कम करूँ तो शायद प्रॉपर डिस्प्ले हो जाए। वैसे तो सेट लाइन से भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो ठीक है। सो बेसिकली वी हैव दिस टेबल। यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखें आप, सो रिकॉर्ड्स आर लाइक दिस। या मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। सेलेक्ट, यहाँ पे MPNO है, ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, थोड़ा लाइन करके दिखा देते हैं। MPNO, ये तो एम्प्लॉय की आईडी हो गई, और हर एक एम्प्लॉय किसी ब्रांच में काम कर रहा है, उसकी ब्रांच की इंफॉर्मेशन है ब्रांच NO इंफॉर्मेशन में।
और ऑब्वियसली एम्प्लॉइज, हर एक एम्प्लॉइज का कोई ना कोई मैनेजर होगा, उसको मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे mngr_no से, राइट। बाकी एम्प्लॉय का नेम वगैरह भी है, राइट, जो भी है। तो एफ नेम ले लेता हूँ मैं, सपोज एफ नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम करके उसका डिपार्टमेंट, ये सब लिया हुआ हमने। एफ नेम और उसका डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन भी है। तो मैं सपोज इतना इन्फॉर्म देता हूँ, फ्रॉम emp_master। So we have this information. So if you see this employee E1 is working under इवान, तो इसके लिए जो मैनेजर है इवान है, और ऑब्वियसली जो मैनेजर है ये भी तो एम्प्लॉय ही है, ये भी कोई एम्प्लॉय ही है, इवान भी एम्प्लॉय ही है कोई ना कोई। तो ये एम्प्लॉय कुछ मैनेजर के अंडर काम कर रहा है, तो मेरे को ये दिखाना है इंफॉर्मेशन दैट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय वर्क्स अंडर द मैनेजर का नेम, ऐसे दिखाना है मेरे को डिस्प्ले करना है पहले तो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे कि दिस एम्प्लॉय वर्क्स अंडर दिस, वर्क्स फॉर दिस मैनेजर, तो जिसके लिए वर्क्स करके ये दिखा रहा है। तो एक ही टेबल में इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको मेरे को कंसीडर थोड़ा सा दो पर्सपेक्टिव में करना है। इन वन पर्सपेक्टिव वी कैन लुक एट दिस टेबल फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, इन अनदर पर्सपेक्टिव वी कैन सी द सेम टेबल फ्रॉम मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, और उन दोनों को हम रिलेट कर दे तो वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो कैसे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेबल एलियासेस वी कैन रिप्रेजेंट सेम सिंगल टेबल इन द फॉर्म ऑफ टू टेम्पोररी टेबल। तो उनको दो टेम्पोररी टेबल की तरह कंसीडर करेंगे, जिसमें एक एम्प्लॉय व्यू होगा, एक दूसरा मेरा मैनेजर व्यू होगा। अब फिर इनको कोरिलेट करके वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो हाउ कैन वी गेट दैट, नाउ आई एम शोइंग यू दैट। तो कैसे करेंगे, एलियासिस से हम उसको दो टेबल की तरह कंसीडर करके देख सकते हैं, एंड देन वी कैन परफॉर्म दैट काइंड ऑफ सेल्फ जॉइन क्वेरी। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट पार्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सी सेम टेबल को दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया फ्रॉम से इसको समझना शुरू करना चाहिए हमें। तो फ्रॉम से करें तो फ्रॉम, मेरी टेबल एक ही है emp_mstr, बट इसके मैंने दो व्यू बनाए। एक में मैंने इसको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया, उसको एमपी दे दिया एलियासिस, फिर से मैंने इसी को लिखा emp_mstr, और हियर आई हैव गिवन नेम सपोज मैनेजर। सो मैंने एक ही टेबल, आई एम क्रिएटिंग टू टेम्परेरी व्यूज ऑफ दिस एमपी मास्टर, दो एलियासिस बना लिए टेबल एलियासिस के थ्रू। सेम टेबल को मैं दो पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, एक एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो हम लेंगे। तो पहले मेरे को चाहिए सेलेक्ट एमपी डॉट नेम, एफ नेम, आई थिंक कॉलम का नेम ना, कॉलम का नेम एफ नेम, हाँ एफ नेम ही देखना है सपोज एफ नेम। तो आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले कि दिस एम्प्लॉय वर्क्स फॉर, तो कॉनकैटिनेट भी कर लेते हैं, ओरेकल में कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर ये, और मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, वर्क्स फॉर और सिंगल कोटेशन में आएगा, एंड वी आर कॉनकैटिनेटिंग इट विद, तो ये तो मैं केवल आउटपुट के लिए कर रहा हूँ। तो ये कॉलम हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे मैनेजर, ये एलियासिस बनाया हमने मैनेजर डॉट, और यहाँ पे भी मेरे को एफ नेम ही चाहिए, तो एफ नेम फ्रॉम दिस, इसको ऐसे कर लेते हैं फ्रॉम दिस। अब आती है ज्वाइन कंडीशन। तो ज्वाइन कंडीशन क्या होगी, वेयर, इन दोनों को कोरिलेट कर देंगे आपस में। तो वेयर मैंने क्या किया, वेयर emp डॉट मैनेजर नंबर, मैं बताया कि फॉरेन को मैनेज करते हैं, तो emp के लिए तो मैनेजर नंबर जो है उसको ले लिया, मैनेजर नंबर mngr_no है, mngr_no इक्वल्स टू मैनेजर, अब मैनेजर के पॉइंट ऑफ से देखा मैनेजर डॉट empno, क्योंकि ये इस empno में भी है तो इनको हमने कंपेयर कर दिया। तो इस तरह से सेम टेबल को, एक सिंगल टेबल को हम दो टेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं टेम्परेरीली, और उसी पे हमने क्वेरी चला दी। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सेल्फ जॉइन, बिकॉज वी आर जॉइनिंग अ टेबल टू इटसेल्फ। एंड सी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। If I'm executing it, see it is showing that, it is showing. So here we are getting this information कि Anjali works for Ivan, Sonal works for Ivan as per this information, जो यहाँ पे employee की information है. So we are getting everything. Right. So here, so in this way you can perform query.
So ये आउटपुट आ गया आपका ना, ये आउटपुट है. When you are performing this query, you are getting this output. So this is one example of self join. तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ जो भी हमने किया आज. So ये तो हो गया database concepts. These are some database concept जो आपको आने ही चाहिए. So तो अब आते हैं, अभी तक ये database है और एक तरफ हमारा Python है. So now we will correlate both of these things together. तो हम इन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करेंगे. How can we interact with database to get something in our Python environment, or if we want to pass something from Python environment to database, how can we do that, right? So now we will see how can we interact with database. Database connectivity हम कैसे कर सकते हैं by using our Python, right? But we will be taking that after a short break. एक break ले लेता, उसके बाद फिर continue करते हैं अपने scenario को. So it's 11:38. So we will continue our session at 11:50. Till then you can have a break. 11:50 पे हम फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी. ओके सर. लेकिन नहीं, उससे पहले एक और चीज लेंगे. हाँ, अभी MySQL तो रह गया. अब MySQL को बताते हैं. अब देखो MySQL पे आप फटाफट काम करोगे. आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट आ गए. नाउ यू आर फैमिलियर विद द डेटाबेस कॉन्सेप्ट. इवन वी हैव इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस कॉन्सेप्ट थ्रू वन RDBMS प्रोग्राम, दैट इज Oracle. नाउ यू आर कैपेबल एनफ टू वर्क विद एनी ऑफ द RDBMS. इसके बाद और अभी आपको दिखाते हैं MySQL है, अभी इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड यू कैन वर्क विद दैट. कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं. अब उसमें इतना कोई टाइम नहीं लगेगा. और फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक पे अगर अच्छे हैं, क्वेरी है और कम टाइम में मेरे को देखना है क्वेरी दूसरे में कैसे आएगी, तो उस तरह के कन्वर्टर भी अवेलेबल है. तो वो भी हम उस अप्रोच का भी एक बार मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊंगा और फिर हम सीधा पाइथन के साथ उनके इंटरफेसिंग करेंगे. तो एक ब्रेक ले लेते हैं एंड वी विल कंटिन्यू सेशन एट 11:50.
Okay, students, I am back. So I'm sharing my screen first. So first of all, here we are going to install MySQL now. So here I have already shared the setup at Google Classroom, and I hope all of you have already downloaded it. So come to that setup part. So here we are going to install it. So whatever installation setup I have given you, you will get this MySQL installer community. Even you can get it from it. It is available at open source, so you can get it from. If you want to work with some latest version, you can get it from internet also. Just Google it, MySQL download, and you will be getting various version of your MySQL. So from here you can download various version of it. This is MySQL. So here you can select any version, whatever you want to install. So in my case, I have already downloaded it, and here we are going to work with this. So to install it, for synchronization, I will recommend that initially you can install, try this. After that, you can move on to any version, whatever you like. So here, I'm going to install it. So just click on it. You can run as administrator also. Click on yes. Yes, and after some time you will be getting this. So here, okay, I hope it is already installed in my system. Oh, it is already installed. In my case, it is already installed here. So we can do one thing, we can uninstall it. मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फिर इसको इंस्टॉल करके दिखाता है. ये एक काम करो, आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर करो. कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन शेयर कर दो. Yes, please. It is just loading right now. Nothing's happening. आप में कोई भी, हाँ, yes. Yeah, I just clicked the setup button. Fine. Nothing's happened yet. So just wait for some time here. कोई एक ही शेयर करो, ऐसे नहीं. Okay, he's sharing. I'll stop. Okay, कोई एक ही शेयर करे. चलो अंबुज ने शेयर किए. अब देखो स्टार्ट से चल रहा था ना, आप इस विंडो पे आ गए. ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल बी गेटिंग दिस विंडो. सो हियर सेलेक्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड क्लिक ऑन ओके. Click on this next, and here we have developer default, server only, client only, full. Click on full, select full, select full option. Yes, click on next. Click on here, click on execute first. Click on execute option, execute button. ये कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया आपने? एक मिनट. इंस्टॉलर को किया, किसको? वही किया है ना. इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो. हाँ ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करो. इंस्टॉल करना है, प्री रिक्विजिट है इसकी. इसका मतलब भी आपके सिस्टम में नहीं है. इंस्टॉल करो. दिस इज प्री रिक्विजिट. इफ इट इज नॉट देयर इन योर सिस्टम, इट विल आस्क फॉर इट. सो जस्ट क्लिक ऑन क्लोज. जरूरी नहीं है ये विंडो सबको है. क्लिक ऑन क्लोज अगर ऑलरेडी है तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. MySQL 8.0.36. ये कौन सा सेटअप है? ये वो सेटअप है जो मैंने दिया आपको.
उसी को रन किया आपने? एक बार मेरे को सेटअप दिखाओ। ये सेटअप है। इंस्टॉलर, ठीक है ठीक है, इसी को रन किया है ना आपने? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, इंस्टॉल होने दीजिए। शेयर दो स्क्रीन, इसको भी क्लिक करो, इसको भी सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करो। ये प्री रिक्विजिट है एक्चुअली, ये सिस्टम में है नहीं आपके, इसलिए इट इज आस्किंग फॉर दिस। तो अगर ये आता है कुछ तो आपको इनको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। फिनिश, जस्ट वेट। क्लोज करो इसको, इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट। अभी होने दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यस। ठीक है, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखो सेटअप में ना यू विल बी गेटिंग सर्वर, माइस्क्ल सर्वर, सर्वर भी रनिंग हो जाएगा बैकग्राउंड में, सर्वर की सर्विसेज भी रनिंग हो जाएगी, और यू आर गेटिंग visual graphical user interface also to interact with your database, which is known as MySQL Workbench. So MySQL Workbench, nothing, it's a client tool through which, it's a front end tool through which you will interact with your MySQL server, database server. So just let it be installed. और भी कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। Sir, for that Microsoft Visual C++, when that shows up, do we repair? इंस्टॉल इट, uninstall नो or नो, जस्ट क्लोज इट। एक बार just close इंस्टॉल it? कर आ रहा है तो इंस्टॉल करना है, रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लोज इट। Okay. सर मेरे इसमें एक्सेल का कुछ फॉर्मेट है, बट लाइक फेलिंग चेक। ओके, लेट इट इंस्टॉल। अगर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना तो जस्ट इंस्टॉल इट। इफ यू आर गेटिंग सम विंडो रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ सम कंपोनेंट, जस्ट इंस्टॉल इट। कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं इसके, इफ दे आर नॉट इन योर सिस्टम एंड यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, सो इट विल शो यू ऑप्शन रिलेटेड टू दैट। जैसे इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस आए थे, दैट इज वन इज रिलेटेड विद C++ reducible package, another one is some office component. Sir, can I share my screen? अभी एक को होने दो, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले Sir, एक we का are not proper installation हम using देख the. ले। Just click on next. Click Sir, on next. we are not downloading the connector Python, that right? Just the Workbench, No. Excel and stuff. Click on next। हाँ, केवल MySQL कर रहे हैं अभी, ये MySQL डेटाबेस सर्वर कर रहे हैं। इंटरनेट पाइथन से कैसे करेंगे, I'll let you know. Click on next. And now here you need to be careful here. Simply next था, लेकिन यहाँ पे केयरफुल होना है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड सभी लोग ट्राई करें कि यू शुड यूज पासवर्ड CDAC 123। यहाँ पे एंटर कर दीजिए CDAC 123, MySQL रूट पासवर्ड। नहीं, स्मॉल में रखने दो सारा, इसमें स्मॉल में, इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। CDAC 123 इन स्मॉल, the character should be in small. In repeat password also type the same CDAC 123. Now click on next. Click on next button. Just click on next. By default option के साथ दे जाएंगे। Click on next. Click on execute. Wait for some time. Here it is trying to start your MySQL database server and configure some settings also.
Now click on finish. Click on next. Click on check. By default user है हमारा root. Click on check. Yes. Click on next. Execute. Click on finish. Click on next. Click on finish. That's it. It is installed now. Now you can tell me, other student can tell me the problems if you are getting any. Sir, actually, I already had this, I guess, setup. So there is some other window now. I tried. I don't remember that I had this. So when I reinstalled it, it went to some other window. I'll show you. Ma'am, sir, is my screen visible? Yes, it is visible. Okay, so this window came. Just select it. Select it. This? Yeah, click on next. No. By default option. Go with the by default option. Just click on next. Next. Yes, click on next. Then it's asking for password. Password. Whatever. Which password you have used during installation? I didn't use it. Came to this window directly. I don't remember. Like I used in college in my third year. I have studied database already in third year, so I don't remember. Should I uninstall everything? I have Workbench, etc. Everything. अगर कोई आप common password, if you use some common password, you can try that. I remember the password for this MySQL 8.0 command line client Unicode. Okay, so that same password should be used there also. Is it Okay, not okay, working there? sir. Same password you No, can I try. didn't try. I'll try same password. Just a second. Yes, is it working or not? Yes, sir. So in this, should I Now execute click now? on next. Yes, now it's good. So it will be working, I think. Okay, sir. Okay, I'll stop presenting. Yeah. Thanks. सर स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता हूँ. सर इस केस में क्या करेंगे? कौन सा सर्वर चूज करना है इसमें? कुछ चूज नहीं इसमें. अच्छा, आपका पहले से इंस्टॉल था क्या कुछ? जी नहीं इंस्टॉल है तो इसको कर दो. हाँ, इस पहले वाले को सिलेक्ट करके आप इसको क्लिक करो. ग्रीन. हाँ ठीक है क्लिक करो. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. हाँ, अगर वर्क बेंच करना है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो. आप जो भी कंपोनेंट करने हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो. वर्क बेंच कर सकते हो करना चाहते हो तो. ओके सर. नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा.
ये इनेबल नहीं है नेक्स्ट आपका। इनको सेलेक्ट कर दो, नेम्ड पाइप, शेयर्ड मेमोरी, दोनों को सेलेक्ट कर लो। तो अभी भी नहीं हुआ है तो इनेबल। आल्सो तो अभी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है I'll just सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Sir, there's a window after that. It's like written reconfigure in quick action panel after the installation. Hello. Sir, disconnected. Okay. Hello, sir. Sir is disconnected. Service not there. So what we have to do in the plugin and extension, sir? Service not there in the session. We can't hear you, Ambuj. पर नहीं है अभी सेशन। डिस्कनेक्ट हो गए क्या सर? हाँ हाँ तो डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। Does anyone know what we have to do in the plugin and extension? Do you have MySQL from before, or is this the first time installing? This is the first time. This is the first time. Okay, so if everything is normal, the only thing we have to be careful of is when it asks for the root password. That time Okay. you have to put cdac123. I think every other step after that is either just next or execute, next, execute, all the way till the end. But in the plugin and extension, there is a box for enable and protocol for MySQL as a document store. So should we have to click on OK, or just have to click on the next? If you have a next option, then probably just click on next. Because there were changes, you can make in every stop, but the way Sir showed it, he just said go by default for all of those.
Only if you have it before, then you have to be a little careful of what you're bringing from your previous, what you're reinstalling. Okay. Otherwise, it And is for in the default. last, okay, I click on the next, and in the last option that applying server configurations, all the configurations are clicked as a green symbol. So should I click on the finish? Yeah, click finish. Okay, Yes, yes. thank you. Yeah, no problem. By the end, you should see this workbench open like this for the version that he selected, 5.7 or whatever it was. सर का मैसेज आया है सर said that we should wait for 5 minutes. There is some problem in the system. Your voice is break. Ambuj, write it in the chat, like your voice is all crackly. Hard to understand anything.
There's a notification in the group, WhatsApp group PGDMI. Hello. Hello. Yeah. Is anyone seeing the notification in the WhatsApp group about Yes, the R? for the registration process for your profile. Okay. You need to complete the steps to install the VPN on your system first. Only after that you can access the site. Okay, students, I am back. I'm sorry to keep you waiting. Actually, ये system ने update लेना शुरू कर दिया था. That is why it has taken a lot of time. Okay, have you installed your setup now?
MySQL इंस्टॉल हो गया? Yes, sir. ओके, किसी को इशू तो नहीं है? सर हो जाए तो Yes, Akhil, tell me. सर स्क्रीनशॉट कर दो। Please. स्क्रीन यूज कर। Click on next. सर एक की Yes. Yes पे क्लिक कर दो. Click on execute. सॉरी की रिक्वायरमेंट्स का इशू था। होने दीजिए. Just click on next. यहाँ पे भी Just click on next. Here you can specify password select 1 2 3. next. Yes, click on next. Next, click on next. सर Click on next. execute. Click on execute. Click on next. Execute. Click on execute. It is installed now. You can close it now. Okay, I hope सभी का इंस्टॉल हो गया होगा ये. Yes, is there anyone जिसका अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है? Sir, I still have issue. I'll reinstall it from starting. Then It's actually showing this screen where there is written quick action, and under that reconfigure in front of MySQL server and MySQL documentation.
Okay, share your screen, please. Okay, sir. MySQL 8 इंस्टॉल्ड है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं इसमें भी ट्राई कर लेंगे. So this screen, I tried to do this. It will leave. We did this. Reconfigure कर क्यों रहे हैं? So this window was coming, so I tried to do like what So I think we have to do. It is already working in your system. You can check. Just close it. Command prompt से आप कर पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है. It is already working then. Okay. It's not a Okay, problem. sir. Okay. Okay, सभी का इंस्टॉल हो गया? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so now see how can you work with this. अब अगर MySQL के साथ आपको वर्क करना है, you can easily work with it. Actually ये अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए फिर से मेरे को इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बट इट विल टेक टाइम. सो एक काम करते हैं, कोई भी एनी वन स्टूडेंट कैन शेयर स्क्रीन जिनका इंस्टॉल हो गया, जो अभी हमने इंस्टॉल कराया है ना. सो जस्ट शेयर योर स्क्रीन. आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन, यू जस्ट नीड टू फॉलो, सो दैट डेमोन्स्ट्रेशन का हमारे पार्ट बन जाए, क्योंकि अभी उसमें टाइम लगेगा अगर मैं उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज so many softwares are running in my system, that is why it is happening. So कोई भी शेयर कर दीजिए. Okay, so see if you want to work with MySQL, there are two options with you. One option is that you can use this MySQL Workbench option. This MySQL Workbench is nothing, it's a client tool, it's a client front-end tool through which you can connect with your MySQL database server, right? So if you want to work with that, you can do one thing, just click on this local instance MySQL 57 option. Just click on this local instance MySQL 57 option. Do I connect? हाँ, just click on it. This local instance एक rectangle बन के आ रहा है. Now it will ask, it is asking for username and password. User is root. I think still it is uploading. I entered the password cdac123. Okay. सभी लोगों ने देखा वो रूट और पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर और पासवर्ड के लिए डिमांड करेगा. यूजर इज रूट and password that you have used during installation. When you will enter the credential, you will see this window. Now what will be the first thing? First thing will be the creation of database, right? So to create the database, there is one option here. If you look at this icon बार, जो मेरी आइकन बार है ना, यहाँ पे देखो एक डेटाबेस जैसा सिंबल बना है. फोर्थ आइकन जो है एक डेटाबेस जैसा सिंबल बना हुआ है. जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन. यस, जस्ट क्लिक ऑन इट. Now it is asking for schema. आप एक काम करो, ये जो SQL एडिशन वाला है ना, इसको या तो क्लोज. हाँ, अब ठीक है. Now and you can enter your database name here. कोई भी database name, suppose type CDAC-DB. In name, type CDAC-DB. Yeah, CDAC-DB. Suppose we are creating database name CDAC-DB and click on apply. Apply again? Yes, apply again. That's it. Okay. Do you have okay a kind of thing? Yeah, it opened another. Let me actually share the full window. I think Yes. right now it's only sharing the. Yeah. Yeah, so when I hit that, it had another pop-up that came. I don't think that was getting shared. No. So it is already created. You can close this now. And we can see in the left pane, you can just close it. Yeah, close it. And now see in the left pane, navigator pane, you have a schema option. And a schema option, this whatever you have created, it is being displayed to you. Schema को एक बार refresh कर लो. यही create किया अभी आपने? Yeah, CDAC TB. TB हो गया, कोई बात नहीं. It's just a name. So here you can create. There is one more option. See, one query window is coming in the middle pane, in the middle area. One query window is coming. Even if you want to create your database, you can use one command also for that. That command is create database name. Just type create database. And after that your database name.
You can give any. Suppose just type demo DB or anything. Okay, CDAC, no problem. CDAC DB, any name you can, yeah. So we are giving this name demo DB, just use semicolon and execute it. To execute, there is one lightning symbol. कुछ icon आ रहे हैं ना, वहाँ पे ले जाओ, tooltip भी आ जाएगा. Here it will display tooltip. Yeah, it is showing execute. Just click on this icon to execute the query. Yeah, your query has been executed, and now go to the in the left hand, go to the schema and refresh it so that you can see. Just a minute, please. Yeah. Hello. Just a minute, please. Okay, so Ashish, you can continue now. So here, see, this demo DB has been created. In this way, you can create database. What will be the next thing? Next thing will be a creation of table and insert, update, delete. So you can use same query, whatever query we have used during our Oracle. And there is one more environment. You can use command prompt also. So next thing we will be doing in command prompt. Here also you can use this. Now, okay. Ashish, you can close it. Should I stop sharing? Close this, yeah, close this environment and go to the start. Go to the start window, and here it will show you MySQL command. When you have installed, many utilities will be installed along with the setup. So there is one utility, MySQL command prompt. Just type MySQL command. Am I typing something wrong? Command utility. It should display that option. MySQL. Okay, just type MySQL so that we can see all the options available with it. Or you can just click on this start option so that we can see all the options related to that. Yeah, it is showing MySQL command line client. See the option. Just click again. It was showing actually. Workbench is there. No, MySQL command line utility will also be there. This is to search it. It's not like present in the. Brother. Okay. Do one thing. Press start. You will see MySQL folder. Yes. Expand click that. On start. Click on start. Scroll down. Go to the MySQL folder. Go on M. तो सारे कंपोनेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे कंपोनेंट देखते हैं यहाँ पे. मैं डायरेक्ट ही सोच रहा था कि शॉर्टकट से. अब नाउ हियर यू सी. So here you have this MySQL command line client. Just click on this. Okay. Now it is asking password. Just enter the password used during the installation. See, you are connected with the MySQL prompt now. Right. So here, now, if you want to create data, and see, if you want to create database, you can create from here also. इसका ना थोड़ा we will increase the font. तो एक काम करो, सबसे टॉप पे राइट क्लिक करो. Right click करो and go to the properties. Yeah, go to the properties and increase the font. Yeah, select font option. Yeah, and just increase 20 I think will be sufficient. Click on OK. Okay. Yeah, okay.
Yes, click on OK. It will increase. Yeah. I think it is properly visible to all of you. So see, if you want to create database, here also you can type create database name. But we have already created. If you want to see the list of all the database available, so you can do one thing, just use show databases. You can use, if you want to see the list of all the databases, you can use show databases, semicolon. See, here it is showing all the database which are already installed. If you want to install new one, you can just use create database name as we have already done. So here it is showing those databases also that you have created through Workbench, CDAC-DB, DemoDB. Now suppose I want to work with DemoDB. So if you want to work with a particular database, for that purpose you need to specify that database as your current database. How can you do that? See, Oracle में मैंने आपको एक statement बताया था, connect system / and CDAC1234 @ That was the way to connect with the database. Here, if you want to connect with any database, you will write use. Just type Ashish. Just type use. Yeah. And after that, the database name with which you want to connect. I want to connect with DemoDB, so type use DemoDB semicolon. Database change. Use DemoDB semicolon. Okay. Just enter. See, it is showing database changes. So now your current database is DemoDB, right? Now here, what is the next thing? We want to create table. Even if you want to see the list of table, in Oracle we use select star from tab, but here you can use show tables. Just type show tables. Semicolon, enter. So right now it is showing empty set, means obviously we have just created this database. So there is no table here, right? So we will be creating our own. So here you can specify the same name for your table. Means same way, same command for your table as you have used in Oracle. Obviously, this data type name may be changed. So here, if we are going to create some table, so you can do one thing: create table name. What should I? Any name you can give, just EMP. And suppose, type EMP. And I want to use some column, suppose ID, name, salary. Suppose I want to use this column. So you can use just within parenthesis, use ID. And data type in Oracle, we have used integer, but here we can use int. Integer can also be used, but here we will be using int, which will take your negative, 0 and positive value. After that, we need not to specify size with that, automatically it will take. And now comma, another column, name. And data type, in data type we use varchar. In Oracle we have used varchar 2. Here we can use varchar. Even in Oracle also we can use varchar. And specify size. Just enter 50 here. We are giving. You can give size as per your requirement. Depends what will be the length, maximum length of data that you will enter in column. Now comma, and here just use salary. Anything else? Yeah. So now here see, in Oracle we have used number. Here also we have various. We have numeric for that. यहाँ पे numeric भी है, decimal भी है, right? So we can make use of it. So you can just type numeric and specify the size of it. Within use parenthesis, and within parenthesis specify 14,2. The same precision scale. Okay. That's it. Now enter. Execute your query just by pressing enter key. See, it is executed. If you want to see the structure, see, we have same command, DSC EMP. Just type DSC EMP. You can use describe, complete word also. So it is showing you the structure of it. ID, name, salary, this. Now, if you want to insert some record in this, you can simply use insert into. You will be using same command, insert into your table name, right? And if you are inserting values in all the columns, directly you can write values. And here also follow the same rule. If you are dealing with char, varchar or date type of value, you need to specify value within single quotation. Number value can be written directly. So first is ID int, so we can use any number, just type 1 here. In name, just type anything, any name you can type within single quotation.
Yes. Okay. Comma, you specify any value for the salary. Even you can use decimal value also if you want. So here, Okay. just enter. Okay. So in this way, you can insert as many record as you want, right? Even if you want to, okay, just enter two or three more records. Any particular values or anything? No, just any value, any value. Yeah. So here we have created this. Now, if you want to view the record, you can simply use select star from your table name. Just type select star from table name. So see, all the records has been. If you want to update some record, you can use same query. So suppose I want to change the salary value. I want to change the salary value of ASI is 12,000 to, suppose I want to change it to 20,000. Suppose. So you can use same query, update. The way of writing the query will be same, update your table name, EMP. After that set operator set, and your column name in which you want to perform modification. We want to perform modification salary equals to, and whatever new value you want to enter. Suppose we are entering any value, any new value can enter. Yeah. Okay. So now, see, now one disaster has done here. What? Because we have used update here. So all the values will be updated to 5,000 because we have not used where clause. Are you getting? Yes. If you want to perform changes with a specific one, suppose किसी एक में change करते हैं, तो same update को कर लो, चाहे up arrow की आप use कर लो, तो हाँ. Now here you will be using where query if you want to make changes with a specific record or records. So just specify any new value and use where. Suppose we want to change the value in first record where ID is 1, so I can use this as a condition, or name also any condition you can use. Okay. ID equals to 1. Should Yeah. work, right? So yeah, enter. So see now, if you look at the records now, so the value. So in this way, you can perform updation. So same query is working here also. If you want to remove some record, suppose I want to remove third record where ID is 3. So you can simply use delete from table name, where, and the condition as per your requirement. In my case, I can use condition where ID equals to 3. That we can do. So just write down the delete query. So delete 1 second, from sir. EMP. There's a monkey in my balcony, so I decided to close it. Oh, okay. Just take Sorry, care what of did you say? yourself first. Delete something, right, sir? Yeah. Means, what was it? Delete from EMP. Where? अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे इस statement, if we are using this statement, all the records will be deleted. But I want to delete only the specific record. That is third one. So to specify that record, we can use this condition where ID equals to 3. Now enter. So if we check the records again, this record has been removed now. If you look at the records, right? So same thing we are doing in this database also. And even the syntax of data constraints are also similar. The only thing that if you are applying constraint, at table level, means सारे column करके उसके बाद हम कर रहे हैं, तो that is same. But if you are doing the same thing for foreign key, if you are applying foreign key at column level, in Oracle we are using after column specification we are using references, but here you will be using foreign key references, the same that you have used with the table. That is the only difference. Otherwise syntax are similar. अगर table level पे कर रहे हैं आप, means पहले column बता के after that if you are applying constraint, it is similar in MySQL also. So if you want to apply constraint, you can apply constraint also. Here also we have functions. Here also we have operators. Most of the operators are same. Function name may be different, but the purpose will be same, right? So, and here group by, having, joining will be working in the same way as it has worked for Oracle. So you can work with this MySQL now. Even you can work in the similar way with other RDBMS also in the similar way, right?
So once we know the concept, we can deal with any RDBMS. और आप करेंगे भी whatever exercise I'll be giving. अभी तो Python के साथ interaction लेंगे हम. And after that, whatever exercise I'll be giving you, it will be your choice whether you want to do it through MySQL or whether you want to do it through Oracle. It will be your choice. Right? So अभी इस सेशन के लिए तो इतना ही रहते हैं. Till now we have taken the case of databases. Even you have seen the case of 2 databases here. Approach is same. कोई भी database हो, किसी पे भी opportunity मिले आपको काम करने की, so you can work with that. क्योंकि concept आपके पास already है और कुछ syntax point of view से हमने यहाँ पे देख भी लिया है 2 databases के साथ. Right? So we have just started MySQL and we are working with this directly. As we already know the concept, so we can easily perform all the things that we have done in Oracle. So इस session के लिए अभी इतना ही रखते हैं. We will continue our session 8 to 2:30 and there we will see the interaction of these databases with our Python environment. अभी तब तक मैं configure भी कर लूँगा इस system में क्योंकि अभी configure नहीं हुआ है. It is conflicting with some component here. तो उसको मैं resolve भी कर लेता हूँ and we will continue this session 8 to 2:30. 2:30 पे हम Python का और अपने databases के साथ उसका interaction देखेंगे and we will perform various operation there. Okay, sir. Sir, group में they have put something about the remote connection and all. Yes. There is one more information. This is regarding your VPN, right? So okay. In second half, I'll arrange. I will call a system admin people, and that system admin person will help you to configure this VPN if anybody is getting some problem in that, right? Okay. ठीक है. अभी installation तो I hope. Compulsory. Which one? Sorry. For the 40 client VPN which has been given, like, is it compulsory or yes, because whatever activities will be going on further, you will be connected through that VPN, so it should be configured, right? So it is compulsory. Whatever different types of activities will be going on during the course, even after the course also, and we need to interact with you, so for that purpose this VPN should be configured. Because many times different type of information can be demanded from you, so through VPN you will be able to do that. Only VPN you will be able to access the system of CDEC. That is why it is necessary. तो कोई भी issues है VPN से related, so I'll call a system admin person in second half and he'll help you to resolve the same. Okay, so we'll do the. Yes, Ashish, tell me. We'll do the full setup in the second half, like, or all of us will just do it at the same time. Is that what you're saying? Which one? Setup of what? This VPN? VPN? Of the VPN, yeah. Yeah. All of you can try those, right? Okay. Because it is necessary for everyone. Configure हो गया तो ठीक, नहीं हुआ कुछ issues आ रहा है तो he will help you in that. Okay. ठीक है, तो अभी कोई query नहीं है तो close करें session. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So here I am closing the session, and we will continue this at 2:30. Thank you, sir. Thank you, sir.